Okay, so what was our topic yesterday? It was active and passive voice. Can you tell me what is voice? Yes. Voice is a form of word which tells us that what is done by us, done to the subject, or what the subject does. Very good. Sit down. A voice is a form of verb that shows what the subject does or what is done to the subject. यानी voice verb की वो फॉर्म है जो हमें ये बताता है कि आया सब्जेक्ट पर कोई काम हुआ है या सब्जेक्ट कोई काम करता है. So active voice. The first question, what is active voice? A form of verb which shows that what the subject does. Okay, the form of verb that shows what the subject does. यानी वर्ब की वो फॉर्म जो हमें ये बताता हो कि सब्जेक्ट क्या करता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल ही रन्स. सो यहाँ पे रन्स जो है ये वर्ब है और ये हमें बता रहा है कि ये सब्जेक्ट ही क्या करता है. कैन यू गिव मी अनदर एग्जांपल? She cooks. शी कुक्स. He He writes. writes. In all these sentences, the verbs runs, cooks, and writes tell us what the subjects he, she, and he do. यानी इन तमाम जुमलों में जो वर्ब है runs, cooks और writes, ये हमें ये बताते हैं कि ये जो subjects है he, she और he, ये क्या करते हैं. Now, what is passive voice? Yes. Form of word which can tell us what the subject what is done to the subject. Yes, very good. The form of verb that tells us what is done to the subject. यानी वर्ब की वो फॉर्म, यानी वर्ब का इस तरह से इस्तेमाल कि वो हमें ये बताए कि सब्जेक्ट पर क्या हुआ है. लेट्स से फॉर एग्जांपल द ग्लास was broken. The glass was broken. What is the subject in this sentence? Not the glass. And the verb was broken. It shows us that what is done to the subject. It shows us what is done to the subject. इस जुमले में ये जो was broken है ये verb है और ये हमें ये बता रहा है कि ग्लास के साथ क्या हुआ है. इन ग्लास ने क्या किया ये हमें ये नहीं बता रहा, बल्कि ये बता रहा है कि ग्लास के साथ क्या हुआ था. सही है? कैन यू गिव मी अनदर एग्जाम्पल? A letter is written by. A letter is written. अच्छा, अब इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? A letter. और वर्ब क्या है? Is written. तो ये यहाँ पे जो वर्ब है is written, ये हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट लेटर के साथ क्या हुआ है, लिखा गया है, लिखा जाता है. So this is passive voice. Okay, another question. Why do we use passive voice? Why do we use passive voice? I mean, if we can talk in active voice, why we use passive voice? अगर हम active voice में बात कर सकते हैं तो हम passive voice में बात क्यों करते हैं? मैंने आपको बताए थे ना reasons. Yes, sometimes we don't know who the doer of the action is. कभी कभी हमें ये पता नहीं होता कि काम किसने किया है. मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 2003, हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये बिल्डिंग किसने बनाई थी. सही है? व्हाट इज़ द सेकंड रीज़न? Yes, that is the third reason. The second reason, when the action is more important than the doer of the action. जब हमारे लिए काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, काम करने वाला इम्पोर्टेंट ना हो. क्लियर? जस्ट लाइक चाइनीज़ इज स्पोकन इन चाइना. तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? चाइनीज़ बोलना. हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन बोलता है, हमारे लिए चाइनीज़ का बोलना इम्पोर्टेंट है. कोई और एग्जाम्पल? My book is stolen. My book is stolen. मेरी किताब चोरी होती है. आप रोज़ आते हो क्लास में और आपकी किताब चोरी होती है तो आप कहते हो माई बुक इज़ स्टोलन, मेरी किताब चोरी होती है. या माई बुक
हैज़ बीन स्टोलन, मेरी किताब चोरी हो गई है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि किताब चोरी होती है या हो चुकी है, किसने चोरी की है ना आपको पता है और ना वो इतना इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द सेकंड रीज़न। एंड द थर्ड रीज़न इज़ इट इज़ मोर पोलाइट समटाइम्स देन एक्टिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस कभी कभार एक्टिव वॉइस से ज़्यादा पोलाइट होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ और मुझसे कोई गलती हो जाए, इफ़ आई कमिट अ मिस्टेक, अ स्टूडेंट स्टैंड्स अप एंड सेज सर अ मिस्टेक हैज़ बीन मेड, एक गलती हो गई है, तो इसका मतलब है यू डिडंट ब्लेम मी, आपने मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाया बल्कि आपने ये कहा है कि गलती हो गई है, जिसका मतलब ये कि हम सब इस गलती का के ज़िम्मेदार है। सही है। सो वाई डू वी यूज़ पैसिव वॉइस? व्हेन वी डोंट नो द डूअर ऑफ द एक्शन, जब हमें काम करने वाले के बारे में पता नहीं होता। व्हेन द एक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर ऑफ द एक्शन। सही। एंड द थर्ड इज़ इट्स स्लाइटली मोर पोलाइट समटाइम्स देन एक्टिव वॉइस। क्लियर? नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको कैसे पता चलेगा कि एक जुमला पैसिव वॉइस में है? नहीं, सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो जुमला है ये पैसिव वॉइस में है। यानी अगर आपके पास जुमले का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि बी की कोई भी फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म मतलब इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इन सब में से कोई लगा हो और उसके बाद जो वर्ब हो उसकी फॉर्म क्या हो, यानी थर्ड फॉर्म हो, या उसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, यानी इसकी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हो। बी की कोई फॉर्म लगी हो, उसके बाद क्या लगा हो, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, दोनों एक ही बात है, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल एक ही फॉर्म्स है। क्लियर? अच्छा, last question and then we will discuss the rest of the active and passive voice in our next class. Last question, what kind of sentences can we change from active into passive voice? किस तरह के जुमलों को हम एक्टिव से पैसिव में तब्दील कर सकते हैं? यस, yes, a sentence in which the verb is used transitive can be changed into passive voice, यानी हम उन जुमलों को पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं जिनमें वर्ब जो है वो ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ हो। क्लियर नाउ? नाउ व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? A verb that requires an object after it to complete the sentence. Yes, a verb that is used with its object. A verb which is used with its object is called transitive verb. Clear? Yes. And intransitive, a verb used without its objects is called intransitive verb. Okay, now can you tell me which of these three verbs is transitive and which one is not? She stopped she stopped at the corner. She stopped suddenly. You can also say she suddenly stopped. You can also say suddenly she stopped, and she stopped me. इनमें से कौन से जुमले का वर्ब ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है? The third sentence. Why? Because it has an object. Okay, it means that stop is both transitive and intransitive. It can be used transitively and it can also be used intransitively. यानी जो stopped है ये ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी है, इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे पहले दो जुमलों में इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है और लास्ट सेंटेंस में ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है। नाउ कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? यस, yes, if you put who or what before the verb, the answer will be the subject. Who stopped at the corner? She. So this is the subject. Who stopped suddenly? She stopped suddenly.
Yes, and who stopped me? She stopped him. In all these three sentences, the subject is she. Now, can you tell me how to find out the object in a sentence? If we put who or what after If you put who or what after the verb, the verb, the answer will be Object. the object. Now, put who or what here. Be careful. She stopped who? She stopped who? Is there any answer? So there is no object. She stopped who? She stopped what? So in the no, she stopped what? Yes. In both these sentences, we do not get the answer if we put who or what after the verb. So it means there is no object in the first two sentences. Now apply the same method. She stopped who? Me. So me is the object. So when you put who or what after the verb and you get an answer, that answer will be the object of the verb. Clear? Yes, sir. Okay.